Hello everyone, welcome to CBL, and now that you have started a new phase of your journey by actually joining the UPSC course, we would be talking about some of the services in this video. And because most of us, when you ask, okay, why you want to become an IAS officer, most of us have answers like, sir, it's a very prestigious job, I want to do something for the development of the country, so my father asked me to do this, I want to make my parents proud, I want to show to my relatives that I'm really exceptional. All that is there, but most of us maybe don't know about the services in that much detail. So in this video, we will be talking about some of the services, and across in the other videos that we will be continuing in this, we will be actually talking about the various services. So the first question is, which are the services? So let's start to talk about that. Okay, give me a second. So, which are the services? Now, the names of the services, as there. So, when you actually clear the prelims and in the interview stage, you will be given a long list of these 24 services. Now, some of them are merged now. There are 22. So, they would be like the IAS, the IFS, the IPS. There's IPPT TAF, there is Audit Accounts, and so on. Now the question is, sir, ye itni services hain, I don't know too much about them. So this is basically a starting of those video series when we'll be talking about all these services. Today we'll be looking at 4 of these approximately, and we will be talking about कि कैसे starting introduction होती है, इनमें क्या होता है, ये हम थोड़ा बहुत we will be talking about. Now कैसे हम discuss करेंगे in the way all the various services, हम बात करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है इन सर्विसेज में, फिर हम देखेंगे कि डेस्क जॉब कितनी होगी, फील्ड जॉब कितनी होगी, कितने साल आप फील्ड में रहेंगे दैट इज इन द डिस्ट्रिक्ट, एंड कितने साल आप सिटी में डेस्क जॉब करेंगे, राइट. देन पर्क्स एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, अगर कितने पर्क्स हैं, कौन से सबसे ज्यादा पर्क्स कौन सी सर्विस में, सो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम. ठीक है, सो ये 3 क्राइटेरिया के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे. Now the first service which we talk about is the Indian Foreign Services. This is perhaps the most prestigious. Why? Because the pre-independence era, this was only done by the Britishers. So once India became independent, everybody wanted to join the services, and at that time it was a very big deal to be able to stay in different parts of the world, to fly, to travel, and moreover the prestige was also there because of the nature of the job. Now, the nature of the job in the service initially was only to handle the diplomacy. Now also they have an angle of a commerce angle as well. So this is how the foreign service is. In certain states, जैसे Bhutan में, Nepal में, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, this becomes very, very important in these places. Right? So Indian Foreign Services becomes very, very important. इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ ट्रेनिंग की स्टार्टिंग में आप लबासना जाएंगे मसूरी में. आफ्टर दैट यू विल गो टू द सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट. दिस इज सम पिक्चर्स फ्रॉम दैट प्लेस. नाउ this is one of the most prestigious area. You will meet the most intelligent people in the service, right? The most intellectual, the most intelligent people who would know how the macro in the world works. Right? How different countries talk to each other, how they behave with each other, why do they behave with each other in the way they do. Okay, those kind of things you will be getting into in-depth knowledge. Right? कि इंडिया चाइना के बीच में रिलेशनशिप कैसे है, कौन डिसाइड करता है? इंडियन फॉरेन सर्विसेज in some ways decides that. Now this has become more important after 2014 because Prime Minister Modi himself took charge of this service because Mrs. Sushma Swaraj was not well, right? And obviously we lost her a few years ago. Now, foreign services mein, obviously the most famous right now is Jai Shankar sir, because obviously he was the foreign secretary and now he's also the minister. Now, so that tells you, the kind of level you can reach. You can even become a minister if you're in this service. Plus, obviously, when you are at the senior stage, you'll become ambassador to a different country. And obviously, that's the most prestigious job you can get as an Indian diplomat. Now, the Indian administrative services still somehow has become the most prestigious across time. Because initially, when we used to talk about the IFS, initially, there have been people who left the IAS to join the IFS. But now this no longer occurs. The first 100 ranks, the first 80 ranks, the IAS normally takes care, and the IFS normally from first 100 to 110, depending on the choices they have made. But the Indian Administrative Services, because it is the face of Indian bureaucracy, and the normal people look at that, this is what we know.
ओके, व्हाई डू आई वांट टू जॉइन द सिविल सर्विसेज? मुझे आईएएस बनना है, मुझे डीसी बनना है, दैट इज द थॉट. नाउ ये कैसे स्टार्ट होता है? आप पहले ज्वाइन करते हैं, आप स्टार्टिंग ट्रेनिंग स्टार्ट होती है लबासना में, देन आपकी ऑन फील्ड ट्रेनिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट होगी. तो उसमें आप पहले यू विल बी सिटिंग विद द पटवारी, यू विल बी सिटिंग विद द तहसीलदार, आप ऑब्वियसली विल बी अटैच्ड टू द डीसी, एंड इन सम years, obviously in 2.5 years of training, you will be joining as the SDM. Now, after the SDM, obviously, you can also be joining as the assistant commissioner in the MC. Then, in time, you'll become the ADC, right? That is the additional district collector. You'll be in charge of the rural part of the district. After that, आपको basically बनाया जाएगा DC, and obviously, DC बनना तो is like the most amazing thing that can happen to you. And I think most of us want to become a DC. All IAS officers want to become a DC. Right, that is the most important job. So इसके बारे में एक बड़ा important quote था, मिस्टर अजीत जोगी जी हैं, ठीक है ना? हाँ, sorry. So Ajit Jogi, he was an IAS as well and then became a CM. So he said in India there are only 3 jobs, right? DC, CM and PM. So ये 3 jobs के लिए ही fight करनी चाहिए, right? बाकी कुछ important नहीं, but that is a very extreme view. Obviously there are other services, other jobs which are equally important, I would say. Now, right, आगे चलते हैं, IPS के बारे में बात करेंगे अब हम. IPS में सरदार वल्लभ भाई पटेल है, नेशनल पुलिस अकेडमी, ये हैदराबाद में है. इसका अलग ही चार्म है, because obviously with the Indian movies we have seen Salman Khan even as an inspector being so powerful. So यहाँ तो आप at least ACP लेवल पे हैं या ASP लेवल पे हैं, that is assistant superintendent of police. आप SP बनेंगे बहुत जल्दी अपनी लाइफ में, बहुत मिडिल, आप before 30 आप SP हैं, okay? Then आप SSP बनेंगे, फिर DIG and so on. Now इसमें क्या है, the first 10 years of life, so this was long ago when I was preparing, I met the DGP of West Bengal and I asked him कि okay क्या choose करना चाहिए, IPS, IAS, IFS, आपके हिसाब से क्या है? He says कि service obviously IAS में better diversity है, but he said that first 10 years of an IAS, for the IPS, sorry, the first 10 years of an IPS, this is better, much better than anything else that you would have seen in your life. Okay, he said, I could really make a difference in the lives of people in the first 10 years of life. So IPS, if you want to make a difference on the ground, जैसे अगर आप चाहते हैं ना, तो SP के पास इतनी पावर होती है कि वो चाहे तो एक चोरी ना हो पाए पूरी डिस्ट्रिक्ट में. So that is how strong he is. All the manpower SP के पास होगी, all the manpower पुलिस के पास होती है. DC basically आपके हेड है, ठीक है ना? Obviously IAS. Obviously, he writes your ACR, so he's obviously more important and more powerful. But at the end of the day, कई जगह commissionerate system है, तो police obviously has a lot of powers as well. ये prestigious है. इसमें एक और भी interesting fact है कि one of our, मेरी friend थी, वो काफ़ी मोटी थी before joining the IPS. So क्या हुआ कि when she came back, she was totally slim and trim, and मैंने बोला यार भाई अब तो हीरोइन लग रही है. So she was like कि वरुण हीरोइन तो छोड़, मतलब it's very difficult in to survive the training. So commando training भी होती है इसमें, if you're good. So amazing, मतलब आपकी मतलब जो I think pride है अपनी body में, आपकी body strength काफ़ी increase हो जाती है. So training itself is a different experience, but I think that's for later. One of the services which I wanted to talk about, so obviously people would say, yes sir, आप revenue पे क्यों नहीं गए अभी? I would say that I want to talk about audit accounts, revenue और बाकी services को हम एक next video में discuss करेंगे, because I would like to talk about the linkages with other services as well there. Now audit accounts का क्या मतलब है ये आप समझिए. पहले तो आप suppose करो, आप let's say I am the DC and Disaster Management Act के अंदर मुझे पैसे मिल जाते हैं कि जैसे मुझे खाना देना है किसी को, राइट? तो लेट्स से 5 करोड़ 10 करोड़ मेरे पास डिस्क्रिशनरी ग्रांट है कोविड के टाइम पे. नाउ वो पैसा मैं कैसे यूज करूंगा ये मेरी कॉल है, बट उसका ऑडिट होगा, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी होती है. तो जब अब सपोज करो मेरे पास देयर विल 10 पीपल और उनकी मैंने पैसे दे दिए उनके इलाज के लिए कोविड में या उनके खाने के लिए, आई गेव डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स. सो वो कैसे चेक होगा कि मैंने वो अपनी जेब में नहीं डाले? तो ये ऑडिट अकाउंट सर्विस चेक करती है. सो इसका रोल बहुत ही स्ट्रांग हो गया था 2010 जब कोलगेट स्कैम हुआ, तब 2G स्कैम हुआ, तो CAG ऑब्वियसली बिकेम मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विस इन इंडिया, राइट? एंड पीपल गॉट टू नो कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं. नॉर्मली इनका जो अगर हम बात करें, इनका फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है, ये सिर्फ डेस्क जॉब है, राइट? शिमला में बहुत ही अमेजिंग इनका इंस्टीट्यूट है, दिस इज यारोस, राइट? एंड इट्स ब्यूटिफुल,
राइट, बट एट द सेम टाइम इसकी प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा है. ऑल डेवलपिंग कंट्रीज वांट ऑडिट अकाउंट सर्विसेज बिकॉज ये एक सर्टन एरिया है जो ऑडिट अकाउंट्स का जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया का. एंड इन सम वेज इट्स वेरी वेरी प्रेस्टिजियस बिकॉज ये बहुत पुराना है, ब्रिटिशर्स के टाइम का है. सो ऑब्वियसली दे हैव वेरी वेरी गुड वैल्यू सिस्टम्स. सो ऑडिट अकाउंट्स आई वुड से दिस इज द बेसिकली अगर हम बात करें तो ये वॉच डॉग है हमारे. ये चेक हैं ऑन द डिस्क्रिजन ऑफ द IAS, द IPS, द अदर सर्विसेज. सो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलती है. तो नॉर्मली अगर हम बात करें, B.R. अम्बेडकर भी यही बात करते हैं कि ये सर्विस में भी सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे एरिया में. एंड इनकी इंडिपेंडेंस के बेसिस पे ही बाकी सर्विसेज एक्चुअली चेक में लाई जा सकती है. So this was a brief introduction about the various services. We will continue this series. We will also have a lot of bureaucrats from these services talking to you in the future. Right? Thank you so much. Obviously, despite the fact हमने थोड़ी बहुत बातें की हैं इनके बारे में, let's hope इससे आप काफ़ी enthusiastic हुए हैं और अब obviously you'll go towards the polity series and अब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे आप. But ध्यान रखिए कि despite the fact हमने थोड़ा बहुत बताया आपको, अभी भी बहुत कुछ जानना है हमें. सो द ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग दैट यू नो नथिंग. ये सोक्रेटिस बोलते हैं, काफ़ी अमेजिंग थिंकर है, पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ाएंगे सर. तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आपको अभी भी नहीं पता है, ठीक है ना. सो आपको हमेशा क्यूरियस होना है, आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप और जानिए. बट आई वुड से दैट अब आफ्टर दिस वीडियो प्लीज गो एंड स्टार्ट योर पॉलिटी वीडियो प्लेलिस्ट और हिस्ट्री प्लेलिस्ट, स्टार्ट स्टडिंग. Thank you so much. Best of luck. And I think this would be the most important phase of your life. During my time, I felt that I grew the most during my prep. So I think, congratulations from starting on this journey. I think this is the part towards you becoming a different person, a more Indian person, I would say in some ways. Thank you so much.